Hello everyone, how are you? Well, guys, as you have already seen on my thumbnail, that is how to make your body active and fit, right? So, this is very easy to do. This is economical as well. Even there is no cost associated with it. Yeah, yeah, this is totally feasible. This is totally something practical. This is, I'm not going to tell you anything that is beyond the scope of a normal person, beyond the scope of like you need to purchase this or that gadget or this or that kind of instrument. There's nothing like that, right? I'm going to tell you something that is everyone is going to connect with. Right, so here we go. यार, अपने आप को फिट रखना बहुत आसान है. पहले तो इफ़ यू आर एन अर्ली बर्ड देन दिस इज़ अ गुड थिंग. एंड बहुत लोग हैं जो नाइट आउल होते हैं और वो नाइट आउल होने में बहुत प्राउड फील करते हैं. दे एसोसिएट दिस थिंग विथ लाइक ही आई एम अमेरिकन, आई एम फॉरेन यूरोपियन कल्चर. यहाँ पे नाइट में ये करते हो, बकवास. If it is something like, suppose you do night shift, okay, it's fine, you don't have any other kind of options for you to change it. But many persons just do it and they feel this is something, they associate this thing, a night owl, to coolness. Really, nothing coolness in this. मतलब जो भी ऐसा मतलब this is very cool to being a night owl. Nothing cool in this, यार. And the person who think that this is, they find coolness in this, they are the most stupid person on this planet. First thing, नेचर के अकॉर्डिंग चलो यार. नेचर, भगवान जी ने मॉर्निंग ही क्यों बनाया है, इवनिंग, आफ्टरनून? यार एक नेचर है, एक लॉ है नेचर का, उसके अकॉर्डिंग चलोगे. कुछ ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो कर, रेड लाइट होने पे हम रुक क्यों जाते? एक रूल है, सेट ऑफ रूल है, वो तो मैन मेड है. और ये नेचर का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की सन रेज ले रहे हो, उससे विटामिन, दैट इज़ सो गुड फॉर योर बॉडी. लाइक यू डू नॉट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक दिस और दैट. सो नेचर का जो लॉ है, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, उसको यू जस्ट सिंपली नीड टू फॉलो इट and you will find a huge difference in your life. So if it is feasible for you, if there is no any such kind of you're not bound to, like, you can be, then go with it. Why not? So become a early bird, right? Then उसके बाद यार वॉक कर, सिंपली वॉक. आई मीन बेयर फुट पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, घास वास पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा है. ट्राई टू जॉगिंग करो आराम से, आधा घंटा सिर्फ मॉर्निंग वॉक भी कर दो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ. You do not need to, fitness. When you say fitness, even most of the people associate this with gym. Oh, you do not need to go to gym, or you do not need to put so much of weight, to lift so much of weight. Nothing like that, यार. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिम में जाके इतने सारे डंबल उठा रहे हो. रॉड जो आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज फॉर द बाइसेप्स एंड ऑल. ओके, विदाउट जिम जाए भी तुम अच्छा एक बॉडी को शेप दे सकते हो, कटवर्स भी सब आ सकते हैं. So what I mean to say, I'm not saying gym is a bad thing. No, gym is a good thing. But if you don't have any kind of intention or this or that, you just want to make your body fit, and you don't want to spend a single penny for it, this is totally feasible. This is totally practical. You just need to just walk, मॉर्निंग वॉक करो आधा घंटा, बेयर फुट में करो, घास वास पे करो तो अच्छा फ्रेश एयर मिलेगा. यार इस बाहर से कुछ भी करो, दैट इज़ नो डाउट, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स. बट इंटरनली तुम गंदा एयर ब्रीथ इन कर रहे हो,
देर तक सो रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ मॉर्निंग वॉक करो। देन आने के बाद, क्योंकि रात भर में हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, तो डिटॉक्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सीफाई के लिए सिंपली आई विल से लेमन वाटर विथ हनी, और लेमन वाटर विथ you can go with only lemon water as well, and you can go with little bit of salt, right, every day. So but the best thing is lemon water and honey. This is going to improve your immune system as well. Immune system means immune system helps you to fight against, combat against bacteria, whatever the thing, toxics, you know, fight against whatever disease they are. If your immune system is strong, it means you have more power to resist the disease, right? As like बहुत तुम देखते हो गए यार, जो बहुत बंदे होते हैं जो फटाक से कुछ भी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, मतलब वो एक महीने में 20 दिन बीमारी रहते हैं। सो उनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है ना। और जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ी सी चीज़ों पे वो वल्नरेबल नहीं होते हैं, है ना। तो ठीक, फिर उसके बाद अच्छा खाना, मतलब इज़ नॉट लाइक ऑयली फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। मॉर्निंग में या ब्रेकफास्ट में ओट्स वगैरह खा सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, जूस पियो। एंड मॉर्निंग दैट इज़ ब्रेकफास्ट मस्ट बी good enough, you know. Must be good enough means must be good enough in terms of quantity as well as quality, right? So fruits, oats, if you are eating something, and one more thing is that, you know, whatever you are going to eat, or whatever you eat, or whatever you will eat in future, just eat it with chew it, you know, just try to chew it at least 32 times a single bite, right? इससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा। यार एक चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई एम जस्ट टेलिंग यू। जब तुम डाइट चू करते हो ना, और जब वो चीज़, अगर तुम्हें एक प्रोवर्ब नहीं पता है, हमें खाने को पीना चाहिए और पीने को खाना चाहिए। जैसे हमें एक डॉग होता है ना, डॉग तुम देखोगे पानी को सिप सिप करके पिएगा, एक बार पिया, गल्प इट, देन पिया, गल्प इट, देन दिस। और हम लाइक, और कभी भी खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू। ओके, वन क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट पानी पीते हैं तो डायरेक्ट हमारी जो किडनी है उसको हैम्पर कर सकते हैं। सो हमें बैठ के पानी पीना चाहिए एनी वेयर एवर यू आर राइट नाउ, और एनी टाइम देयर, यू जस्ट ड्रिंक इट by simply just sit any place and just take it, right? And it is good for you when you will not eat, drink by sip, right? You just took the one sip of it, gulp it, then take, right? Don't go with flow, right? सेकेंडली, अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अच्छा प्रॉपर कर लिया, वर्क पे जा रहे हो, ठीक है, इट्स फाइन। देन लंच प्रॉपर करो, अच्छा खाओ, डो नॉट गो विद पराठा दिस और दैट, यू नो, लाइक कुछ भी मैकडी में जा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, यू नो, पिज्ज़ा एंड मैकडी दे एसोसिएट दिस थिंग विद स्टैंडर्ड। इफ समबडी इज ईटिंग पिज्ज़ा और मैकडी, इट मीन्स ही और शी इज रिच, or he or she has some class. More than that, in this, the person who go to any pizza or McD, they associate this thing with coolness as well. This is absurd. This is totally absurd, nothing else. How to do absurd thing and you can relate that thing with coolness? Doesn't make sense, isn't it? Then इवनिंग में स्नैक्स ले सकते हो, लाइट जंक फूड। ये जंक मीन्स व्हाट, कचरा, ट्रैश, गार्बेज। जंक फूड, कचरा फूड खाना पसंद करोगे क्या? वही पैसे दे के? हॉरिबल मैन, मैं तो नहीं कर सकता।
देन नाइट में लाइट खाना खाना चाहिए, नो, जस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट इट शुड बी लाइट, इट्स नॉट लाइक यू तुम फिलअप कर दो। देन अर्ली जैसे हमें जो ब्रेकफास्ट करना चाहिए वो राजा की तरह करनी चाहिए, जो लंच है वो रानी की तरह करना चाहिए, और जो हमें डिनर करना चाहिए वो जस्ट लाइक अ बैगर, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज लाइक आवर डिनर शुड मस्ट बी लाइट इनफ, राइट। उसके साथ आफ्टर डिनर यू कैन गो विथ मिल्क is a good one, and in lunch you can go with lassi, don't go with milk. This is not the right stuff to drink in lunch, right? What else? One more thing is that we are not very much aware about our health, like suppose, in our body everything is connected, right? As like हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होने का इट मीन्स प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो यू विल सी योर नेल्स आर ऑल्सो लुक्स वेरी वियर्ड, एंड यू विल लाइक एवरीथिंग इज एसोसिएटेड, दैट्स वाई इसको रब करने से हेयर ग्रोथ क्यों, बिकॉज जस्ट एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ इट, सो व्हाट आई मीन टू से, जैसे कि हम बहुत चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें कहीं चेस्ट में पेन हो रहा है, सो ठीक है, चेस्ट में पेन हुआ, तुमने ऐसा रब कर दिया, थोड़ा सा एक मेडिसिन दिया, ठीक हो गया, इस बार जस्ट नॉर्मल मैन, सबको होता रहता है, in this also many person find coolness in this, what is, oh my god, anyways what I mean to say is जैसे ले लिया, लेकिन यार okay, no doubt you have taken the medicine and that medicine just suppress that pain, but you can't ignore it, why it's happening, and if you will not proper cure it, that pain or this or that, anything, yeah, anything, then that is going to, after some time, that is going to worse, and that will going to spread whole in your whole body, and that how anything spreads that earlier, like suppose any person suffer from cancer, right, when if any person finding the symptoms of it, and in the early stage of it, if we consulting any doctor will find, okay, he or she has suffered from cancer, then doctor the possibility of that person to keep the that cancer, he or doctor can do something for it, he can stop it, he can eradicate that cancer, but if any person ignoring, and final stage of anything, तो उसके लिए डॉक्टर के लिए भी मुश्किल डिफ़िकल्ट हो जाता है, और यूजुअली यही होता है, मतलब it is something difficult for any person, like though they are doctor, they also say this is the last, I can't do anything for it. So do not ignore if anything mishappening in your body, just take it seriously, and why it's happening, don't take it like I have taken the painkiller and that is going to suppress my, that is actually the short term, short term ready, but for the long term that is going to hamper your body, right? सो गाइज दिस इज़ आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं यार, अगर तुम उसको ध्यान दोगे ना, तो यू डू नॉट नीड टू गो विथ हाई फाई काइंड ऑफ थिंग्स, सिंपली लाइफ स्टाइल को तुम फॉलो करके तुम अच्छा फिट रह सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, फुल रह सकते हो, यू डोंट नीड टू go to gym or purchase an instrument, this or that, बहुत नाटक है, this is to make your life fit, active, is frugal, is very simple, is very practical, is very feasible for any person. All you need to do is just follow the law of nature, whatever the things, as like chicken is good, is a good source of protein, but if you are taking chicken 4 or 5 days in a week, that is going to hamper. So vegetables has its own values, meat or chicken this has its own values, so take in equal proportion, do not violate the law of nature, go with it,
right? Getting my point. So this is all about this videos, guys. I hope this video has given some kind of what some kind of clarification in your life, like how to deal with anything, or how you can make your body fit, active, cheerful, enthusiastic, how you can be, how you can understand what is happening in my body. Even 99, even there is no control over your body. I mean, whatever the thing, whatever the process happening in your body, that is something what we are unaware of, and we don't have any control over it. What I mean to say is, suppose I'm getting some pain in my chest, then I can't ignore it. Why? I need to find what is happening wrong in my chest, right? सो these are the things यार. एंड अगर तुम खुद अगर अच्छा नहीं हो फिज़िकली या मेंटली, अच्छा अगर तुम्हें कुछ पेन होता रहता है कुछ भी, तुम देखो उसका ऑफ कोर्स बिकॉज एवरीथिंग इज एसोसिएटेड, तो तुम्हारा माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है ना. तुम हमेशा इरिटेटेड रहोगे, मतलब तुम कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी चीज़ में. तो ये चीज़ होता है, तो इट इज़ बेटर टू रिजॉल्व द थिंग्स इंस्टेड टू okay, I will take it later on. No, don't do this. This is not the right way to do anything. Just try to find a solution of it, and once it will eradicate, who is going to stop you, right? So these are the things, guys. You can do. Observe your life, what is happening in your life, right? And as like I always elaborate, and I always propagate my new my message that do whatever you want to do whatever you like to enjoy. These are the things, if you will do, then you will never feel bored, or you will excel in your life, right? So this is the ultimate final conclusion of this video, guys. I hope you got some idea how to make your life active, cheerful, and fit. Fitness, even you body become fit, you feel good about yourself, and in good body the good thinking, everything positive thinking comes. Otherwise, if you will, so as like it's also reflects how dressing sense, how you are wearing the dressing sense also reflects your mentality. Suppose if you are going in any of the exam with dirty clothes, you will find that you will not getting the right stuff, even though you are pressing so much on your head, but you are not getting the right stuff. You're not recalling the thing, you're not remembering the thing. It's happening, it's reflects. So these are the things. Yeah, there are so many things to tell you, but it's already going to 20 minutes. It's already been so much of it's already been a long video. So guys, I'm going to wind up this video. I hope you will follow these simple rules, easy rules, and after this your life will also become cheerful and active, right? Have a great day.